Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, I will cover three topics. First is Sukhoi Jet, second is Human Space Flight Center, and third will be Hargil. And these all topics will be very important for IS 2020 prelims. So let's start with the first topic, Sukhoi Jet, because we will cover some basic facts and for prelims, facts plus current affairs plus statics. So recently, Indian Air Force introduced the first batch of 6 of 18 Russian Sukhoi 30 MKI fighter jet at Tamil Nadu Tanjavur Air Force Station. So Indian Air Force ने अपना जो फर्स्ट बैच था 6 which is out of 18 Russian Sukhoi 13, तो ये है रशिया का Sukhoi 30 MKI fighter jets at Tamil Nadu Tanjavur Air Force Station, and it will bolster Indian offensive capabilities in the Indian Ocean region against the China, as they can fly 1500 km without having to refuel mid-air. Okay, तो 1500 किलोमीटर तक without refueling उड़ सकते हैं, and thus help providing security over to island territories and sea lines of communication. The fighter jets are equipped with the air variant of the BrahMos cruise missile. You know, Russia plus India दोनों से मिलकर बनी है क्रूज मिसाइल which is called BrahMos, which is a range of 290 किलोमीटर, तो 290 किलोमीटर की रेंज की BrahMos मिसाइल, BrahMos, the fastest missile of the world. The BrahMos is a medium range ramjet supersonic cruise missile. तो एक होती क्रूज, ओके, जो बिल्कुल स्ट्रेट जाए उसको क्रूज मिसाइल कहते हैं. दैट कैन लॉन्च फ्रॉम सबमेरीन शिप्स एयरक्राफ्ट और लैंड. ठीक है, इसको सबमेरीन से भी हम लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी, एयरक्राफ्ट और लैंड सबसे, और इट्स ए जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया. तो फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है अभी तक सुखोई जेट के बारे में, जिसमें हमने बात की है सुखोई 30 MKI फाइटर जेट and in contrast plus a BrahMos cruise missile. And the Indian Navy already has Boeing built P-8I long range multi-mission maritime patrolling aircraft in that area that is armed with a Harpoon anti-ship missile. Okay, Harpoon, which is called anti-ship missile. Anti-ship missile. And it is capable of conducting anti-submarine warfare. So ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक. नाउ द सेकंड टॉपिक इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, और रिसेंटली इसरो inaugurated this human space flight center for the गगनयान प्रोजेक्ट, जो 2021 के दिसंबर तक जाएगा स्पेस में. और अकॉर्डिंग टू मी कोविड-19 से ये प्रोजेक्ट थोड़ा और पोस्टपोन किया जा सकता है. तो इट वाज इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2019 अंडर ISRO, Indian Space Research Organization, to coordinate Indian Human Space Flight Program. So Human Space Flight Center which was inaugurated in January 2019, okay, तो थोड़ा पुरानी न्यूज की बात कर रहे हैं, under the ISRO to coordinate Indian Human Space Flight Program, and it will be responsible for the implementation of the गगनयान प्रोजेक्ट, जो ऑफिशियली 2021 में दिसंबर में जाएगा. It will be involved in the end-to-end mission planning, development of engineering system for crew survival in a space, crew selection and training, and also pursue activities for sustained human space flight mission. Clear? Human Space Flight Center will take support of existing ISRO centers to implement the first development flight of Gaganyaan under HSP, and the currently HSP work in split across various centers such as Vikram Sarabhai. Okay, so I'm talking about HSP, Human Space Flight Program. तो ह्यूमन स्पेस
flight program is work is split across various centers such as Vikram Sarabhai Space Center right now in Thiruvananthapuram, the capital of Kerala, and the UR Rao Satellite Center in Bengaluru. तो जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है ये दो पार्ट में वर्क करेगा और रेदर कर रहा है, such as first part is Vikram Sarabhai Space Center in Thiruvananthapuram and the second one is UR Rao Satellite Center in Bengaluru. Now the third topic is Hargil. Okay, we have covered two topics and now the third topic is Hargil, the Assam State Zoo cum Botanical Garden and Aranyak. Okay, Aranyak का मतलब होता है forest. So the Assam State Zoo cum Botanical Garden and Aranyak, that is a wildlife conservation organization, were successfully able to hatch a pair of greater adjutant stock which is called Hargil, the chicks on artificial platform within the zoo enclosure. तो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है. You know the greater adjutant stock, the scientific name is Leptopteros and dubius, is one of the rarest species of stork out of the 20 species of stork in the world, and we call it a Hargil. And in India, 8 species of residential stork are found, including Hargil. And once abundantly distributed in South and Southeast Asia, the stork is now restricted to a few isolated pockets in Assam and Bihar in India and the Praktol in Cambodia. तो ये जो हार्गिल इंडिया में पाया जाता है, रेदर असम में और बिहार में ये ज्यादा पाया जाता है. तो थ्रेट इसका क्या है? हैबिटेट लॉस, पोचिंग, शिकार और पॉइजनिंग. ओके, नेक्स्ट IUCN कंजर्वेशन स्टेटस. यू नो IUCN जो हर साल रेड डाटा बुक रिपोर्ट रिलीज करती है, तो इसके अंदर 9 कैटेगरीज होती हैं, पर मेन 3 कैटेगरीज होती है, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड. तो हार्गिल का इस टाइम पर IUCN कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड. सो नेक्स्ट वन, दे ब्रीड ऑन टॉल ट्रीज. तो ये कहां पर मोस्टली रिलायबल करते हैं? टॉल ट्रीज पे. सो कटिंग डाउन ऑफ नेस्टिंग ट्रीज infrastructural constructions has resulted in the breeding failure of the species, and many historical breeding colonies have gone missing in the historical distribution range. So we covered three small topics. Sukhoi jet, you know Sukhoi jet एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं. जो हमने बात की सुखोई जेट की, तो सुखोई जेट रशिया एंड ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर रेंज और सुखोई जेट 1500 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग, without having to refuel in mid-air. Second one, we covered Human Space Flight Center, the setup by the ISRO. And third one is Hargil. So look at the picture, the Botanical Garden of Assam. So we covered 3 topics: Sukhoi jet, Human Space Flight Center and Hargil. So I hope you like this video. Kindly share my video and subscribe my YouTube channel Pinnacle Study Group. Thank you so much.